Hey there, it's my 23rd tutorial on preparation for GRE, and my apologies for taking so long to upload this new tutorial. But as I told you guys, I had my exams, and to make up for it, I've got something new this time. As you can see on the screen, we'll be doing visual vocab now onwards, only if you guys like it, because it takes a little more effort than the earlier pattern, and if you don't like it, obviously there's no point of doing it. So but anyway, if it's helpful to you, I'll continue to do it, and please let me know through the comment box below. Okay, so the first word today is bleak. अब bleak किससे rhyme करता है? Black से. Oops, what's wrong? Yeah, तो bleak किससे rhyme करता है? Bleak rhymes with black. और black usually क्या denote करता है? Sadness, hopelessness, क्योंकि कलरफुल डिनोट करता है हैप्पीनेस और ब्लैक सैड. तो ब्लैक डिनोट्स सैडनेस और होपलेसनेस सॉरी. तो ब्लीक का मीनिंग क्या हुआ? देयरफॉर ब्लीक मीन्स hopelessness or hopeless or not encouraging. और इसका सेकेंड निमोनिक क्या है? इसमें क्या आता है? लीक. ब्लीक में आता है लीक. और क्या लीक हो गई? होप लीक हो गई. होप लीक्ड, इसलिए नॉट एनकरेजिंग. Okay, our next word is blight. Blight क्या होता है? Blight होता है चलो पहले निमोनिक करते हैं. Blight का निमोनिक है plight of education in Indian society because India is blighted by inequality. I doubt if you can remember that, but it's okay. Plight of education in Indian society because India is blighted by inequality. तो blight क्या होता है? बेसिकली blight is something which destroys things. तो blight को एक पोटैटोज में डिसीज़ भी होता है. ब्लाइट इज़ अ डिजीज़ विच डिस्ट्रॉयज पोटैटोज, वुड्स, प्लांट्स. सो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? माई लाइफ इज़ ब्लाइटेड बाई दिस, हिज कैरियर हैज़ बीन ब्लाइटेड. तो यूज़ ऑफ ब्लाइट इन सेंटेंस कैसे होगा? हिज career has been blighted. So blight, what does that mean? Blight means someone or something that damages things. Blight is means if someone or something blights it, it destroys it. Our next word is blowhard. अब blowhard क्या होता है? जैसे इमेज में क्या है? I, me, I am, I said, I did, I will. So blowhard is someone who is always bragging, talking about himself. मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. तो that is blowhard. तो blowhard means what's wrong? Means braggart. तो इसका यूज़ कैसे करते हैं? blowhard in sentence. I don't like company of blowhard people. So blowhard people are those who are always talking about what they did,
what they are, who they are. So blowhard people are those who are always bragging about themselves. And our next word is bluster. अब जैसे इमेज में वो क्या कर रहे हैं उसकी तरफ निमोनिक समझ आएगी होगा, लस्टफुली देख रहे, तो ब्लस्टर में क्या आता है, लस्ट, ब्लस्टर में आता है लस्ट, तो इसका निमोनिक क्या है, so mnemonic is she blustered because he was looking at her lustfully. तो bluster का मतलब क्या हुआ, to get very angry. Bluster means to get very angry. Okay, so if someone is blustering, they are talking in an aggressive or threatening way. Or if someone is blustering, they are talking in a very aggressive way. Our next word is boats. अब इसमें इमेज में क्या है, बोट, बोट्स किससे राइम करता है, बोट से, बोट्स राइम्स विथ बोट्स, तो इसका निमोनिक क्या है, आई होप देयर बोट जर्नी बोट्स वेल. सो बोट्स का मीनिंग क्या होता है, मीन actually it's boat, not even boats, that is used in a sentence like that. So boat means if something bodes well, it will happen. If something bodes well, it means something good will happen. Means something good will happen. And if something bodes bad, it means something bad will happen. और ये सिनोनिम है एक वर्ड का जो हम कर चुके हैं, and the word is board का सिनोनिम है augurs. Board is synonym augurs. Our next word is boisterous. अब boisterous का निमोनिक क्या है, बॉयज, जैसे इमेज में क्या है, बॉयज भी है और नीचे म्यूजिक सिस्टम भी है नॉइस करने के लिए. तो इसका बॉयज कैसे होते हैं, बॉयज आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी एंड आर ऑलवेज मेकिंग नॉइस. सो boisterous means someone who is boisterous is noisy and full of energy. Someone who is full of energy and noise. Our next word is boorish. Okay, तो boorish का निमोनिक क्या है, boorish किससे राइम करता है, बुरा से. boorish rhymes with बुरा, और बुरा हम किसे कहते हैं, जो हमसे बहुत रूडली बात करते हैं, like a big jerk, and is synonym with rude and uncultured. तो boorish rhymes with बुरा.
We call someone bura when they talk rudely. तो boorish means, boorish का मतलब क्या हुआ? Insensitive and rude. Insensitive, rude, uncultured, who says bad things like a jerk. So with this we come to the end of our tutorial today. If you like the tutorial, don't forget to subscribe to the channel, and again just to remind you, please let me know through the comment box below if you like the visual vocab more. Thank you so much. Bye bye.